You're watching No Spin. On paper, India has banned manual scavenging, the terrible practice of men and women cleaning sewers and sanitary pits with their hands. The law passed 9 years ago says authorities need to ensure no one is employing manual scavengers and that technology is used so sewage is not handled manually. In August this year, the Minister for Social Justice went a step further and said no manual scavengers exist in India. And yet this morning, India woke up to a grim but familiar headline. 4 men died while cleaning a sewer. Ravi Kumar, Ravi Goldar, Vishal and Rohit Kumar, all in their 20s. This time, the deaths took place in the suburb of Faridabad in Haryana, just outside Delhi. So how does this work? Manual scavenging is illegal. The governments are meant to ensure that sewers are cleaned using safe technology, and according to the government, scavengers don't even exist. And yet hundreds of men and women go into stinking gas-filled sewers risking their lives, many of whom don't make it out alive. NDTV's Vedant Agarwal travelled to Faridabad to find double-speak and evasion by those responsible and families shattered by grief. Grief, anger and despair in Faridabad. These are the families of the 4 men killed in toxic chambers of an underground tank of a local hospital. This is a sewer pit where the tragic incident happened. Who takes accountability for the death of these 4 men? Well, in the course of our investigation, the hospital management said that this is not a sewer pit at all, it's a rainwater chamber, which means they're either lying or owning up to a case of negligence where the hospital did not realize that there are toxic gases present inside the pit. The families say the men were regularly hired by a Delhi-based agency, Santushti Allied Services, contracted by the hospital to clean their tanks. But Vishal's brother says this time the work was far more dangerous than the past and that they were given no safety equipment. के बारे में जो कल काम हुआ है सर, उसके बारे में कंपनी को ना कोई नॉलेज थी, ना हमारे लड़कों को कोई नॉलेज थी. जो हम बेसिक काम करते हैं वो काम करते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट कुछ भी नहीं चाहिए उसके लिए हमें. बस ये था कि कल उन्होंने एक्स्ट्रा काम करवाया. जो काम हमारा बेसिक है उसको ना करवाने की जगह उन्होंने दूसरा काम करवाया इनसे. मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से फोन आया है, उन्होंने ये बोला है कि जी 4 लड़के भेज दो, क्योंकि जिसमें बेसिकली 3 लड़के जाते हैं हर बारी. ठीक है. आज उन्होंने 4 लड़के, हमने सोचा कि भाई कोई एक्स्ट्रा काम होगा इनको, कि सर कुछ काम है, कोई नहीं, थोड़ा सा फालतू काम कराना है. ये बेसिक नहीं बताया उन्होंने कि हाँ ये काम ही करवाना उनको. हॉस्पिटल ने ये चीज ठेकेदारों को बताई? नहीं बताई. सालों से तो नहीं कर रहे, कभी कभार चले जाते थे, पर वहाँ पे कुछ और काम बताया था कि कुछ और काम करना है, पर उन्होंने सीवर का काम कराया जो उसमें लोग चले गए चारों के चारों. सफाई का काम. तो ये इसके पहले क्या काम करते थे वो? इसका पहले सफाई का काम करते थे. इसके पहले कभी सीवर वगैरह के अंदर या मैनहोल के अंदर नहीं भेजे? नहीं, कभी नहीं गए. उन्होंने हमारे साथ चीटिंग करी है. उन्होंने किन्होंने? हॉस्पिटल वालों ने या फिर जो एजेंसी वाले? जो ठेकेदार था उसने. ठेकेदार ने चीटिंग करी है? हाँ, कुछ और काम करवाना था पर उनसे कुछ और काम करवाया. तो ठेकेदारों ने भी करी है, दोनों ने करी है. The families say it's only after they protested that the police has booked the hospital and the agency that hired these men for murder, as well as under the SC/ST Act, since the men were from the Dalit community. जो QRG हॉस्पिटल है वहाँ से भी आपने कोई पूछताछ करी है? हाँ, वहाँ से हम पूछताछ कर रहे हैं कि किसी को इन्होंने टेंडर दिया था और किन कंडीशन में टेंडर दिया हुआ. जी. और ये बात क्लियर है कि बिना किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के वो अंदर गए थे? यस, ये बात क्लियर है कि बिना किसी, और ये वो 10 से 12 फीट डीप सीवर था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. But already attempts to evade blame. Hospital officials, reluctant to come on camera, say that the pit where the men died was a rainwater chamber and not a septic tank. The medical superintendent of the ORG hospital in Faridabad, who says, and I quote, "This is not a sewer tank where we ask them to go. It is a rain chamber. There is supposed to be no gas." But the stink at the pit where the men died tells its own story. The company which hired these men claim they are not to blame.
They say the men were not provided safety gear since they were never contracted to do risky work like entering sewers, and that the hospital was meant to ensure the safety of the men. But NDTV accessed the contract between the hospital and the agency, which clearly says that they provide sewer pit cleaning services and that they have the machines and cleaning equipment to do the job. Contrary to the claims in the contract, the families say the company would pick up these men as daily workers. No contract, no safeguards for a pittance of less than 500 rupees a day. की दिहाड़ी लगती थी, कभी नहीं भी लगती थी ये दिहाड़ी बेस पे थे। पर डे इन्हें 450 रुपये मिलते थे और छोटे छोटे सीवर खुलाए जाते थे। लेकिन ये जो सीवर खुलाया गया है ये हॉस्पिटल की लापरवाही के वजह से। This tragic incident is a reminder of how the most disadvantaged communities have to bear the brunt of such humiliation, and also how after the death, neither the contractors nor the hospital authorities in this case are ready to take accountability. In Faridabad, with camera person Sushil Rathi, Vedant, NDTV. All right, joining me tonight on the show, we have with us Bezwada Wilson, who of course is very well known as someone who's been organizing the Safai Karamcharis, is with us. DP Kaushik, spokesperson BJP Haryana, is with us. We also will be going across later in the show to Meera Kumar, former Minister for Social Justice and former Speaker of the Lok Sabha, for a one-to-one conversation. But also with us, and I'll start with him, is Puneet Gautam is here with us. He's the brother of Ravi Kumar, who's one of the four men who tragically died in that sewer. So let me just begin with him. Puneet ji, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप जुड़े इस वक्त हमारे साथ। बहुत ही कठिन घड़ी है आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए। ये बताइए कि जैसे हम परिवार वालों से भी सुन रहे थे कि आपके भाई को कुछ आइडिया था, कोई इशारा दिया गया था इस किस्म का कि इस किस्म के काम के लिए ले जाया जा रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट पे आप। उनको सफाई के काम के लिए लेके आए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको सीवेज टैंक में उतारेंगे, गटर में उतारेंगे। इसका कोई आइडिया नहीं दिया गया था? जी, वो अगर देखिए, अगर वो उनको बता के करते या कुछ भी होता। अच्छा, इनको तो हॉस्पिटल वालों को तो पता है कि हमारा टैंक है, इस टैंक में गैस हो सकती है, इस टैंक में कुछ भी हो सकता है, तो उनको सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह देना चाहिए था, या जो वेल ट्रेंड बंदे हैं उन लोगों से उनको काम कराना चाहिए था जी। नहीं, तो उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि सफाई के लिए दिहाड़ी पे, वो तो उनको दिहाड़ी पे लेके आए थे 400 रुपए से। आप देखिए ना, कल पूरा देश दशहरा की क्या नाम है त्योहार बना रहा था, और हमारे वो बच्चे गटर में उतरने चले गए। कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, कोई ना कोई उनका ये जो काम है इसकी वजह से मजबूरी रही होगी। और ठेकेदार या जो शिवाजी हॉस्पिटल जो कह रहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, या किसकी जिम्मेदारी बनती है? अगर मेरा हॉस्पिटल चल रहा है और मेरे यहाँ पे कोई काम करने आता है तो वो जिम्मेदारी मेरी तो होगी ना, ठेकेदार। नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो डीपी कौशिक, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? आप ठेकेदार अपॉइंट करते हो तो उनसे सारे नॉर्म्स वगैरह सब फिल कराते हैं ना जी। इन लोगों से तो कोई फॉर्म वगैरह भी फिल नहीं कराया गया कि आपको नीचे उतरना है या कुछ भी। उनको लाए, उनको सफाई के लिए लाए और काम जी। नहीं, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास पुनीत जी, बट डीपी कौशिक, Haryana BJP, how do you explain this? Because government says that there is nothing like manual scavenging. Manual scavenging has been eliminated. This is a parliamentary reply. And it's illegal and it's been eliminated, and yet people are going into sewers without any protection and dying. देखिए जैन साहब, पहले तो चार जो डेथ हुई है इनके प्रति हमारी सरकार की हमारी बिल्कुल हमदर्दी है, और जो भी हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। हमारे यहाँ पे क्या हरियाणा सरकार ही पूरे प्रदेश में, देश में मुझे लगता है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आई है कि हरी मशीनों से सारा काम होता है। सीवर में तो अलाउ ही नहीं है मैनुअल पे कोई काम करने का। फिर भी जो एजेंसी रही है, चाहे वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के एंड से कोई गलती हुई है, एजेंसी के एंड से कोई गलती हुई है, उनको इनिशिएट करके नहीं, आप कह रहे हैं कि ये अलाउ नहीं है, लेकिन सरकार ने खुद पार्लियामेंट में कहा है कि 2013 से लेकर 17
2017 से लेके 21 तक करीब ऐसे 330 मौतें हुई हैं सुअर में। अग्री सर, अग्री। पर ये मैं बता रहा हूँ, ये लापरवाही नेग्लिजेंसी रही है सर। मशीनरी अवेलेबल होती है, देखिए निगम के अंदर इतनी मशीनरी आई हुई है, और मैनुअल तो काम मुझे लगता नहीं है अभी कहीं पे हो रहा होगा। अगर हुआ है तो वो भी गलत है। जब मशीनरी अवेलेबल है तो उसके बाद मैनुअल काम कराने का, अगर मैनुअल भी होना भी था तो सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत है, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट उनको लगाने चाहिए था, सेफ्टी प्रिकॉशन उनको यूज करना चाहिए था। हॉस्पिटल के हैंडल पर रही गलती है, इसकी भी रही गलती। नहीं, बट इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ ना सर, नहीं मैं कह रहा हूँ सरकार ने तो जब एक चीज अवेलेबिलिटी दी हुई है, भाई मशीनरी से होगा ये सब, और गाइडलाइन भी जारी की हुई है, तो मैनुअल अगर प्राइवेट किसी एजेंसी करवाए तो दोषी है, और दोषी को तो सजा मिलनी जायज है, वो आपको भी पता है। पर सरकार परिवार के साथ खड़ी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन करके जो इसे सामने आएगा उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। Bezwada Wilson, this is what we hear every time, that whenever there is something like this, the government says, oh, we've issued the guidelines that, manual scavenging, we've eliminated it. If it's private people are doing it illegally, then, it's on them. Do you buy this? अब एक बात हम लोग बहुत डिस्कशन है, हम लोग ने सारे एक समझना, अगर कोई भी सारे यांत्रिक रूप से साफ हुए तो सरकारी पार्लियामेंट में कहा 330 लोग ने मर चुका, कैसे मरा? मशीन से साफ करे तो कैसे मरा? सो हमने थोड़ा ईमानदारी से बात करना भी बहुत जरूरी है। 75 साल आजादी के बाद हम शर्म करना पड़ते हैं, ये देश का नागरिक का गटर के अंदर घुसा के त्योहार का दिन, दसरा का दिन हमने मार डाला। सो हमने हानेस्टली बाहर आके, सही है, हरियाणा सरकार 2022 पे 17 पीपल डाइड इन हरियाणा। सो हम कैसे कह सकते हैं इधर 17 people have died in Haryana. One second, this is important. 17 people 2022 in 17 people died in Haryana. In sewer. Yes, sewer and septic tank. कैसे हम लोग कह सकते हैं? Post COVID, the number is in a, if you count, it is in a 24 people died. So हमने इसका डिनाई करना, थोड़ा बंद करना, ये अच्छा बात नहीं है। कोई भी मर रहा है तो कोई एक्सीडेंट हो रहा है, एक मुख्यमंत्री बाहर आके एक बयान दे सकते, एक अनफॉर्चुनेट इट हैपेंड, इट इज नॉट अनफॉर्चुनेट। हमने, हमारा पास राजनीतिक इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है। इफ यू हैव ए पॉलिटिकल विल, you can do better in the Haryana, because Haryana is not a big state. It is in a small state, छोटा शहर है, शहर भी बहुत कम है। तो आपने इतने लोग मरने के बाद भी आप ये बात नहीं कह सकते, आई एम वेरी सॉरी। हमने इसका मान के लेना, गलत हो गया और गलत नहीं हो जाएगा, ये बताना बहुत जरूरी है। कोई इस पे ओके, लेट आई इनको रिस्पॉन्ड कर, लेट मिस्टर कौशिक रिस्पॉन्ड। कौशिक साहब, ये जो कह रहे हैं कि हरियाणा में इसी साल ऐसे 22 लोग गटर सीवर में मर गए, देश 75 साल का इंडिपेंडेंस मना रहा है और 22 लोग गटर सीवर में जाके उनकी मौतें हो गई। जन साहब, आई नो पहले भी घटना घटी है, गुड़गांव की घटना भी घटी थी, फरीदाबाद में भी वैसे घटना घटी थी, तो हमने एक्शन भी लिया था। हमने तभी ये सब गाइडलाइन जारी कर दी थी कि मैनुअल का काम नहीं होगा। फिर भी अगर कोई इस तरह की प्राइवेट एजेंसी है तो थोड़ा सा और इसको स्ट्रिक्टनेस बरतनी पड़ेगी सरकार को भी, और जो प्रशासन है उसको भी। इस तरह की जो घटनाएं इलीगल होती हैं, जिन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, उस पे उनके खिलाफ कार्रवाई करके जो आप कह रहे हैं, एक कि पुनीत भाई हमारे साथ हैं। पुनीत भाई, ये जो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें मिट गई हैं, खत्म हो गई हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि खुद आपके परिवार के लोग, मजबूरी होगी कि इसी को करते हैं, इसी काम को कर रहे हैं दिहाड़ी पे। आपकी आवाज म्यूट पे हो गई, आप म्यूट पे हैं पुनीत भाई। मजबूरी जो है वो मजदूरी कराती है, मजबूरी जो है ना वो मजदूरी कराती है, इसलिए वो लोग दिल्ली से फरीदाबाद आए। दिल्ली नहीं तो फरीदाबाद में क्या एमसीएच स्टाफ नहीं है जिससे काम करा सकते हैं इनके पास? इन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल बना लिया, उस हॉस्पिटल में इनके पास इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी, क्या इनके पास गटर साफ करने के लिए मशीनें नहीं थी? तो कोई मशीनरी, आपको कोई वो सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह जो ये कहते हैं कि सरकार कहती है कि सब मशीनरी इक्विपमेंट, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ दिया गया? मैं जब कल वहाँ हॉस्पिटल पहुंचा था, जब मुझे पता लगा था कि इन भाइयों के साथ ये घटना घटित हुई है, तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा था, तो
उनके पास जब मैं वहां गया था ना, जब डेड बॉडीज को वो लेके बीके हॉस्पिटल के लिए आए थे, उस समय वहां पे मैंने देखा था वो गटर के बाहर जो है, वो न्यूज चैनल वाले भी थे, वो गटर के पास एक रस्सी थी, तो एक पाइप था जिस रस्सी की सहायता से वो नीचे उतरे थे। अच्छा, so that is the state of the equipment and the machinery. So Bezwada Wilson, this is the I mean, गटर में तो ताज़ा ही नहीं चाहिए था इनको, उस गटर में तो मशीन से सफाई होनी चाहिए। आप देखो ना, जो मेडिकल वेस्ट होता है, उस मेडिकल वेस्ट से तो कितनी गंदगी निकलती होगी जी, उसमें मिथेन गैस होगी। एक बंदा नीचे उतरा, उसके बाद उन तीनों, वो जो नीचे बंदा जो पहले उतरा था, उसको देखने के लिए तीनों गए और वो तीनों भी मर गए जी। So ये नहीं, ये जो आप कह रहे हैं, एक सेकेंड, बेजवादा विल्सन, this is the, you've been screaming this from the rooftops or all the, that on one hand the government keeps saying we've eliminated the whole practice, there's no manual scavenging, there is no manual scavengers, and yet for 400 300 rupees people are still going into sewer pits. What is that if that's not manual scavenging? Everybody knows that it is a scavenging only, it is a manually doing by the people. And the Act also says very clearly, untreated human excreta kahi bhi hoga. If it is there, whoever is carrying, disposing untreated human excreta is called the name manual scavenging only. So don't go with the definition, all those very nitty-gritty. Very simplest thing is, when in the country, within the 5 years, 570 people when died, why the government is just keeping quiet and throwing all the responsibilities on the hospital. Hospital must have then a sewage treatment plan. If they are not having, how you allow them to do that? And they are outsource that work to the contract. But तो लास्ट में कौशिक साहब, क्या एटलीस्ट ऐसे जब घटनाएं होती हैं तो सरकार इतना तो माने कि बार बार ये कहना कि हमने ये सारा स्कैवेंजिंग बंद कर दिया है, स्कैवेंजर्स नहीं है, इसको तो वापस लें, क्योंकि ये एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है कि लोग मजदूरी दिहाड़ी जो भी करेंगे, इस किस्म का काम किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। देखिए सर, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके बावजूद इस तरह की घटना घटी है, तो ये तो आपको भी मालूम है कि जो भी एजेंसी या जो भी ठेकेदार इसके अंदर इन्वॉल्व है, गलती उसके एंड पे हुई है। बट सरकार की तरफ से मैं बताना चाहूंगा, आगे इस तरह की ना हो, इसके लिए हम लोग काफी प्रयास करेंगे और स्ट्रिक्टली जो गाइडलाइन है उनको जारी करके, और मुझे लगता है कि इस तरह की दोबारा घटना ना घटे, ये हमारा प्रयास रहेगा। जो घटना घटी है उसके लिए बिल्कुल दुखदायी घटना है ये, और परिवार के साथ हमारी सरकार खड़ी है। चलिए, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बट बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब जुड़े हमारे साथ। लेट मी गो अक्रॉस नाउ टू मीरा कुमार, हु हैज बीन लिसनिंग इन टू ऑल ऑफ दिस। मीरा कुमार, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। यू बीन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस for I think UPA 1 the whole time, and this has been, Meera Kumar, unfortunately a terrible thing that has happened across time, across governments, these deaths, all of that. What I mean, is this a collective failure of governments across time? Vasu? Yes. I'm joining the discussion on something very sad, which has and which should completely shake up the collective consciousness of this country. It is happening, and let's not get implicated in politics of it. I can easily do that because this has happened in a BJP-ruled government, but I will not take that route. The main cause of this is something which we live with and we have been living with for thousands of years, and that is the caste system. The lives of these people have no value. You're saying because that is why it has been made into a contract system. Why has it been brought No, when you into say a caste contract system, it's just important to put this in context for viewers who don't know that most of these workers who do this, the people who do this, are of the lower caste. Most of them are Dalits.
Yes. That's exactly what I'm saying. Yeah. Exactly what I'm saying. You should have said it earlier. But I'm pointing to it that they are the poorest of the poor. It is one thing that we have the poor people in our country. But it is how we treat the poor people of our country. They are the poorest of the poor. But ma'am, I want to ask you. They are the lowest on the social No, I understand. But I want to ask you because, of course, I don't want to politicize. No, but just a second. I don't want to politicize, but at the same time, isn't there official culpability, as I said, across governments? Because while, of course, the caste system is a malaise, the fact is that this was banned. I mean, this was already banned for years, and the fresh law was passed in 2013, further making it more stringent. But yet, the fact that it continues, surely governments across the board, whether it's Congress, BJP, have to take accountability. Yes, there have been two acts. One in 1993, the other is in 2013-14. And it got implemented in 14, it was enacted in 13. But when I was Social Justice Minister, I had made sure, and I was continuously monitoring, that because it's a state subject, because all the states have given affidavit that they don't have manual scavenging in their state. That if you give it in private hands, how do you monitor it? Has to be under the Safai Karmachari and the scavenging has to be a government job. It has to be under the care of the government. Don't leave it in the callous hands of the contracts. But last question, were you saying... That's what I'm coming to. No, but when you were minister, are you saying there were no deaths? There was none of this? Because these deaths have happened at all times. No, you go through the figures, you will come to know. Go through the figures. We try to monitor it and control it as much as possible. But to control it completely, you also know the reality of this country. The other thing is that it should be made a highly paid job. Please listen to me carefully. Cleaning, Safai Karmachari's work, and scavenging, there's no scavenging. There should not be any scavenging, but it should be made a highly paid job, because those who enter this, they have a stigma. So remove that stigma. Vasu, I'm telling you, to remove that stigma. Okay, make it It should be highly paid job. All right. Another thing is that the citizens should also take some responsibility. Citizens, if they are seeing that on the road, when their young men are jumping into the manhole or in the gutter, they should protest. They protest over everything. Why aren't they protesting over it? The world is watching us. They're seeing how you treat your people. Well, of course, we're out of time. The poorest and the weakest. How do you treat them? Okay, we're out of time. Interesting suggestion that make it highly paid, but citizens, I mean, of course, citizens can get involved, but ultimately responsibility must vest with the state, which is meant to ensure that the rule of law is followed. But thank you very much indeed for joining us. That's all the time we have on the show. Thanks for watching. Good night.